रहीम जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग एंड जावास्क्रिप्ट में एक बात याद रखें कि जावास्क्रिप्ट का अब जो वर्जन चल रहा है वो 7 चल रहा है। ठीक है, ये 6 इसे कहते हैं, ये 7। ओके, तो इस पे इंशाल्लाह एक दिन बात होगी जो कि एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट आप कह सकते हैं। ठीक, मैनी पीपल डोंट नो अबाउट दैट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट दैट। जावास्क्रिप्ट फंक्शंस क्या है? कैन एनीबॉडी नो अबाउट फंक्शंस? दैट व्हाट इज फंक्शन? Which performs a specific task. We have listened that a function performs a specific task, but can anybody know about the specific task? The behavior of page means, can you please give me an example? Yes, you can tell in a Pashto or in a Urdu, no matter. Means if you want to subtract two numbers or two variables, okay, then we do some calculation or we write some lines of code inside the curly braces inside the start function, and in function braces we write some code and that code is called specific फंक्शन। फंक्शन वो होता है जो कि कुछ मखसूस काम करता है। मखसूस काम करने का मतलब कर्ली ब्रेसिस के फंक्शन की बॉडी के अंदर जो हम कुछ कोड लिखते हैं वो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस. The one type of functions are called built-in functions and the other type of functions are called user-defined functions. A JavaScript function is a block of code designed to perform a particular task. You must have seen functions like alert function, you have seen that, like write function. These are built-in functions. These are already defined in a JavaScript translator. We are using these functions again and again, but they had been written in core JavaScript only once. We can use these all functions again and again. हम इनको बार बार यूज कर सकते हैं because वो लिखे गए हैं। जब आप ब्राउज़र पर इनको रन करते हैं तो ब्राउज़र को पता चलता है because they are translated in a browser. ब्राउज़र में जावास्क्रिप्ट के ट्रांसलेटर इम्बीड होते हैं, लगे होते हैं। जैसे वो जावास्क्रिप्ट का ये कोड देख लेते हैं तो वो खुद वो ट्रांसलेट करते हैं। JavaScript allows us to write our own functions as well. Okay, and that functions are called user defined functions. यू कैन रीयूज कोड। फंक्शन में सबसे बड़ी बात यह है आप कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। रीयूज, एक बार फंक्शन का कोड लिखा, उस फंक्शन को जस्ट एक बार लिखे तो वही कोड रन हो जाएगा, वही फंक्शनलिटी फिर से आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपने प्लस जमा के लिए एक फंक्शन को लिखा है तो आप उसी फंक्शन को दो तीन जगहों पे यूज कर सकते हैं एंड दैट मीन्स यू कैन यूज द रीयूज द कोड। डिफाइन द कोड वंस, एक बार आप सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या एनी टास्क, यू राइट एनी टास्क एंड देन रीयूज दैट कोड एंड यूज इट मैनी टाइम्स. If you see, the syntax of a function is, here we write the function keyword. Keyword means reserved words which is already defined in a translator of a JavaScript or which is already defined in a core JavaScript. Here we write the function keyword and after function keyword we write the function name. By function name I mean any name. Any name means, any name means that it is a, the one is called a variable and the second is called variable का मुतबादिल क्या है? मुतबादिल। वेरिएबल रूल्स में भी पढ़ा है। ओके, लेट इट गो। फंक्शन, फंक्शन का नाम और यहाँ पर पैरामीटर्स लिस्ट। पैरामीटर लिस्ट, अब तक आपने पैरामीटर्स भी पढ़े होंगे। यू हैव स्टडीड अबाउट द पैरामीटर्स एंड यू हैव आल्सो स्टडीड अबाउट द आर्गुमेंट्स। कैन एनीबॉडी डिफरेंशिएट बिटवीन द पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स? एग्जैक्टली, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। पैरामीटर्स जो होते हैं, पैरामीटर्स आर रियल टाइम वैल्यूज लाइक ए बी सी डी, दीज आर नेम्स ऑफ पैरामीटर्स. But arguments are real-time values like 2, 3, 4, 5. These are arguments. So here function, function name, and here is the list of parameters. Okay, and inside that curly braces, this is called a function body. This is called function body, means curly brace start and curly brace end. इसके दरमियान जो कोड आप लिखेंगे इसको कहते हैं performs a specific task. Okay. सिंपल फंक्शन एग्जांपल, इफ यू सी हियर, एक सिंपल फंक्शन एग्जांपल हम करते हैं।
we take a button and certainly we take a type बटन की टाइप को बटन ले लेते हैं एंड यहाँ पे एक इवेंट लेते हैं. दिस इज एन इवेंट विच इज कॉल्ड अनक्लिक इवेंट and on click event we run a function with the name of hello function and hello function is a user defined function. मतलब ये कि जब इस बटन पर क्लिक किया जाता है तो आप इस हेलो फंक्शन को रन करें. वी स्टडीड दैट फंक्शन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क. तो जैसे बटन पर हम प्रेस करते हैं मीन्स के बटन पर प्रेस करने से फंक्शन रन हो जाए. जब फंक्शन रन होता है इसका मतलब है कि फंक्शन एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करे और वो स्पेसिफिक टास्क हमने लिखा होगा ये करली ब्रेसिस के अंदर जो फंक्शन की बॉडी है. फंक्शन की स्टार्ट और इन करली ब्रेसिस के दरमियान में जो कुछ होगा तो वो रन हो जाएगा. तो यहाँ पर एक बटन लेते हैं एंड बटन पे हम कोई फंक्शन रन करते हैं. लेट्स डू इट. First of all, when you want to make any page here, click on the new and then text document. Have we write the like functions dot html. Here we write an html file. Here we created an html file with the name of functions.html and ht control space से html की जो basic structure है ये आ जाती है. We can create a basic structure of html by pressing control space and here you can give the title to the page like JavaScript functions. Okay, you have to do nothing special but here you can start a script. But before that, first of all you write a button code, and to write a button code we here write button take start and button take in, and here you write the type button because we want to create a button, that's why we are writing here a type button, and give a name to the button like run the function. This is the name of a button. Control S, we want if you want to save the file then you have to press control S and here you can open in a Google Chrome. Right, this is a button with the name of run the function. If you want to change the name of the button then you can change here, you can write anything here. Okay, here you have to write an on click event. You have to write on click and on click means यहाँ पे हम ऑन क्लिक पर एक फंक्शन रन करना चाहते हैं. उस फंक्शन को कोई भी नाम आप दे सकते हैं लेकिन बिफोर दैट यहाँ पर आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे दैट hello function, my function, test function, whatever name you want to give. So here I give hello function and this is the function sign. These are the function sign. ये function के sign है. यहाँ पर आप कॉमा लगाते हैं एंड आपने कह दिया कि जैसे इस रन फंक्शन के बटन पर क्लिक किया जाता है तो ये रन फंक्शन हेलो फंक्शन को रन करे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो फंक्शन को जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं एंड फॉर दैट पर्पस यू हैव टू राइट अ स्क्रिप्ट टैग बिकॉज whenever you want to write a javascript code then you have to write the javascript code inside a script tag. This is a tag and this is a starting tag, this is a ending tag. Here you have to write function keyword as we discussed, function keyword, and here you have to write the function name and the function name is hello function, whatever you have given here. Okay, control C and control V, and you have to write the function sign and you have to start the function body, and inside the function body you have to write a specific code which will perform the specific task. Like if you want to add two numbers then you have to write a code for two numbers. Like if you want to show an alert then you have to write a code for alerts. Like I want to show an alert and here hello you pressed a button and the function is here. Just like dummy text मैंने दे दिया. I have given some dummy text. You can write here anything you want. I just want to show an alert because I just want to perform any task and any specific task, and alert is also a specific task. So अब क्या हो जाएगा मुसव्विर, अब क्या हो जाएगा ये कोड जो मैंने लिखा. alert बशोशी sure
तब बटन पर क्लिक करें तब क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली, बी कॉन्फिडेंट यार, बटन पर क्लिक करने से अलर्ट होगा, because we have written the code that by clicking on a button you run the function, and inside function there is an alert. You pressed a button and the function is here. Okay, and if you want to perform any other specific action, you write here code for that. For example, variable a equal to 200. Okay, and here volumes now variable b equal to 500. Okay, and you want to add these two variables, and you want to add these two values, not variable, I'm really sorry. Here you have to write another variable result, and you have to assign the two, and you have to plus, or you have to add these two values a and b, means a प्लस बी, जिसका मतलब है कि 200 प्लस 500, and it is stored inside a variable result. Okay, sure. We have studied about the four outputs in JavaScript. Can anybody remember? चार तरीकों से हम आउटपुट को शो कर सकते हैं. Can anybody remember? Alert, one, document.write, inner.html, and console.log. Very good, great, thank you so much. तो कौन से तरीके से मैं आउटपुट को शो करूं? Because document.write, yes, if you want to show the result, then you can show it by four ways, as we have discussed in previous class. And here document.write, and document.write, inside document.write you have to write result. Okay, because you want to show the output, and the output is inside result variable. Control S, you have to save that, and here you have to refresh that. Now by pressing the button run the function, क्या हो जाएगा? Directly result or write हो जाएगा, and the result is 700, because here you can see that 200 plus 500, 700 result में से store है, and here we have to output the result. And now if you want to attach some message with that result, then I have to write something like that. Okay, and here the addition of two numbers is equal to, and here you have to concatenate by writing a plus sign. Now here the plus sign, the plus sign means concatenation. Concatenation means like to chain the message and the result. Okay, control S, and here you can see again, if I refresh and by clicking the button, the addition of two numbers is equal to 700. This is a message, and the message is changed with a 700, means with the result. So this is the concept of a function. Now the function performs a specific task, which is addition of two numbers. Okay, you can write anything here. Okay, fine, and the function is run when we click on the button. Yes, sure. Exactly, prompt. Exactly, anywhere. फंक्शन का टॉपिक डिटेल्स हैं, बाद में से इंशाल्लाह आपको और भी क्लियर हो जाएगा, एंड एवरीथिंग. दिस इज द स्टार्ट ऑफ ए फंक्शन. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन इन्वोकेशन. इन्वोकेशन मींस किसी को बुलाना. ओके, function invocation, can anybody know about that? What is function invocation? Function invocation means function call. Function call means when you call a function. Call a function का मतलब है कि जैसे कि मैं यहाँ पे टाले प्रेस करता हूँ, वहाँ पे चपरासी आ जाता है. यहाँ पे मैं बटन प्रेस कर देता हूँ, फंक्शन रन हो जाता है. दिस इज अ फंक्शन इन्वोकेशन. आप फंक्शन को जगाते हैं, आप फंक्शन को कॉल करते हैं. दिस इज अ फंक्शन कॉल. आई राइट हियर ऑन अ बटन. हियर देखो, बटन पर क्लिक करने से हेलो फंक्शन इन्वोक हो जाए, हेलो फंक्शन रन हो जाए. दिस इज कॉल्ड फंक्शन इन्वोकेशन. देखो, दिस इज अ फंक्शन इन्वोकेशन, एंड इनसाइड फंक्शन बॉडी व्हाटएवर इट विल इन्वोक, इट विल शो इन आउटपुट. क्लियर है ये सब कुछ? मेरी बात की समझ आ रही है?
रियली? किसको नहीं आ रही? Anybody here who don't know English well and who could not understand? कोई है ऐसा? ओके, फंक्शन रिटर्न क्या है? फंक्शन रिटर्न ये है, the code inside the functions or curly braces will execute when something invokes or calls the function. जब कोई बटन कोई भी चीज़ इनको इन्वोक करे या इनको बुलाए तो इसको फंक्शन इन्वोकेशन कहते हैं। फंक्शन रिटर्न किसे कहते हैं? द फंक्शन विल स्टॉप एग्जीक्यूटिंग व्हेन जावास्क्रिप्ट रीचेज अ रिटर्न स्टेटमेंट। जब आप कुछ रिटर्न करते हैं तो जैसे ही ट्रांसलेशन होती है तो रिटर्न स्टेटमेंट पर एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है, ठीक है, आउटपुट शो हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। ओके, यह जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है और वही जो है रिटर्न की एग्जांपल भी आप यहाँ पे ले सकते हैं कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से किया गया है, दैट्स वाई यहाँ पे इस तरह एग्जांपल है। एक फंक्शन लिया गया है फर्स्ट फंक्शन, यहाँ पे p1 एंड p2 और व्हाट p1 एंड p2 और पैरामीटर्स। बिकॉज अगर आप फंक्शन की बॉडी को स्टडी करें, देखो यहाँ पे फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, यहाँ पे पैरामीटर लिस्ट फंक्शन नेम के साथ होता है, सो हियर पैरामीटर्स लिस्ट है। p1 एंड p2 आर पैरामीटर्स, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है p1 प्लस p2, तो p1 एंड प्लस p2 क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, there is no mean for p1 and p2, but यहाँ पर आप 14 and 3 you pass 14 and 3 as an arguments, तो 14 फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट पैरामीटर पे रिप्लेस हो जाएगा एंड 3 सेकंड वैल्यू पे रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली आर्गुमेंट जो काम करते हैं वो प्लेस होल्डर की तरह काम करते हैं। as you have seen a placeholder in HTML that temporary time के लिए होता है, और जैसे आप इस इनपुट के अंदर कुछ लिखना शुरू करते हैं तो वो गायब ही हो जाता है, तो गायब हो जाता है। तो मतलब ये कि ये p1 एंड p2 कुछ टाइम के लिए होते हैं, जब फंक्शन रन हो जाता है यहाँ पे 14 p1 की जगह रिप्लेस एंड 3 p2 की जगह रिप्लेस, फिर इसकी जगह आ जाता है 14, इसकी जगह आ जाता है 3, ये दोनों में प्लस हो जाते हैं एंड रिटर्न हो जाते हैं। रिटर्न मीन्स आउटपुट शो कर देते हैं, बस स्टॉप एग्जीक्यूटिंग आफ्टर दैट। ओके, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दैट। Note: function parameters are the names listed in the function definition like p1 and p2. Function arguments are the real values received by the function when it is invoked like 14 and 3. Okay. You can also write here, I can give you the example of arguments and parameters like by pressing a button and the button name is hello. By pressing the button hello, you have to run a function test function and click event, because whenever I click the hello button it will run a test function, and in test function there are two parameters sharp and 9. Okay, sharp and okay, I'm really sorry, function test function, and here in test function there is a parameter name and age, and document dot write name is a message and name is a message, and it is concatenated with is, and it is concatenated with age, and plus it is concatenated with years old। तो मतलब शाद यहाँ पे आ जाएगा, is अपनी जगह पे, years कितने, एज कितना है 9 years old। ओके, तो ये आ जाएगा। बेसिकली डायरेक्टली यहाँ पर उनको मिले हैं, डायरेक्टली आर्गूमेंट्स उनको मिले हैं और यहाँ पर फिर पैरामीटर्स मिले हैं, तो डायरेक्टली आप इनको रन भी कर सकते हैं, इस पैरामीटर को यहाँ से उठा के। You have studied functions in detail, that's why I am not wasting so much time on that functions. Yes, sure. Let's write in the script. Oh. Because ये HTML की है बटन, ठीक है, बटन HTML की है, बाकी जो कोड है वो
ऑन क्लिक, जैसे क्लिक किया जाता है, then you have to run the test function, and inside that test function these are the arguments, and the first argument is short and the second argument is 9. As you have studied that you have to write the string inside double quotes or single quotes, and you have to write the digits without quotes. Okay, and you have also studied that in double quotes you cannot take double quotes. ओके, डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स नहीं ले सकते, सिंगल कोट्स लेंगे आप, एंड इनको आप डबल कोट्स के बगैर लिखेंगे डिजिट्स को। ओके, तो रन यहाँ पे हेलो बटन पर क्लिक करने से, या इसको भी नाम देते हैं रन, रन द फंक्शन, कंट्रोल एस, नाउ लेट्स वेट। ओके, शाद इज 9 years ओल्ड, ये कैसे आ गया, ये शाद यहाँ पे आ गया, ये 9 यहाँ पे आ गया। इसके बाद हम आउटपुट कर रहे हैं, तो नेम, नेम में क्या है, शाद है, ठीक है, एंड फिर कनकेटिनेट, यहाँ पे शाद आ गया, फिर कनकेटिनेट इज के साथ, एंड फिर इज कनकेटिनेट एज के साथ, और एज में क्या स्टोर है, 9 स्टोर है। ओके, और फिर कनकेटिनेट ईयर्स ओल्ड, मीन्स शाद इज 9 years ओल्ड, और ये आपको मिल गया सब। ओके, क्लियर, रिस्पांस थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब आपको इंशाल्लाह हायर प्रोग्रामिंग में मालूम हो जाएगा, ठीक है, कि इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर जस्ट आप लर्निंग कर रहे हैं, वहाँ पर जब आप एक्चुअल फंक्शंस के साथ आपका वास्ता करना पड़े तो आपको मालूम हो जाएगा कि हम इसको क्यों यूज़ कर रहे थे। बिकॉज यू हैव टू मेक फंक्शंस, आप एडिट डिलीट के लिए भी फंक्शंस बनाएंगे, वहाँ पर आप एडिट डिलीट में भी वैल्यूज पास करेंगे, आर्गूमेंट पास करेंगे, ठीक है। जब कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क में आप करते हैं तो एडिट डिलीट इसके लिए भी आप फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है, मीन्स एपीआई इस टाइप के आप बनाते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप एक फंक्शंस बना लेते हैं, फंक्शंस में से यहाँ पे आर्गूमेंट पैरामीटर्स ले लेते हैं, और फिर आप जस्ट आर्गूमेंट्स पास करते हैं, वो आर्गूमेंट्स चेंज होते रहते हैं वाइल पैरामीटर्स सेम होते हैं, ठीक है। तो अभी क्योंकि अभी वो है नहीं तो मैं कैसे समझाऊँ उस पर, बट यू हैव टू लर्न दैट बेसिक थिंग्स के फंक्शन यूँ होता है। अब यहाँ पे इतने ज़्यादा फंक्शंस नहीं है, पीएचपी के साथ फिर फंक्शंस यूज़ होते हैं, तो वहाँ पे इंशाल्लाह फिर आप सीखेंगे, ठीक है, कि फंक्शंस काम क्या करते हैं। ये बेसिक्स आप इतना सीखें, बाकी आपको वर्क मालूम हो जाएगा आगे। ओके, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? Exactly. Anything around you is an object. Like you are an object, laptop is an object, table is an object, and these all things are objects. Okay. JavaScript objects means that if you write here variable person, and inside person, now the person is an object. You cannot say it a variable. Okay, because it is an object. Person एक शख्स object है, okay, and inside that object you store different values like फर्स्ट नेम, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आप स्टोर कर रहे हैं। फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम को आप दे रहे हैं ज़ारा, लास्ट नेम को आप स्टोर कर रहे हैं खान, एंड एज में आप स्टोर कर रहे हैं 30, एंड आई कलर में आप स्टोर कर रहे हैं ब्लू, एंड दीज ऑल डिटेल्स आर स्टोर्ड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट पर्सन। पर्सन ऑब्जेक्ट के अंदर ये पर्सन के सारे डिटेल्स स्टोर है, और बेसिकली इनको हमने वेरिएबल लिखा है, बिकॉज दिस इज आल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल। ऑब्जेक्ट इज आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल, जिस तरह के एरे हैं, ठीक। तो यूँ कर सकते हैं। इसके बाद आप जब एक्सेस करना चाहें फर्स्ट नेम को, तो आप अगर ज़ारा को एक्सेस करना चाहेंगे तो आप पर्सन के अंदर फर्स्ट नेम को लिखेंगे आउटपुट में, जैसे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इनर एचटीएमएल मींस पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम मींस ज़ारा इज पर्सन डॉट एज 30 years old। ओके, जस्ट ये एग्जांपल मैं आपके लिए लिख लूँ, यहाँ पे ही लिखूं, ओके, यहाँ पे ही लिख लूंगा, कोई कोई बात नहीं है। यहाँ पे एक नहीं, एक h1 लिख लेता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ही कर देता हूँ, या आप अगर कहते हैं कि यार फंक्शन से करें, तो फंक्शन से ये होगा कि फिर किसी बटन पर क्लिक करने से वो फंक्शनिंग होगी,
ठीक, मतलब अगर आप उस तरह चाहते हैं कि बटन से करें, ये डायरेक्टली शो होगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि बटन पर क्लिक करने से शो हो, तो फिर बटन पर क्लिक करने से शो होगा। ठीक, तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक, तो चलो यहाँ पर एक h1 लिख लेते हैं और h1 में यहाँ पे id देते हैं डेमो की। ठीक, या शो ऑब्जेक्ट डिटेल्स, जो भी id है वो आप दे सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रिप्ट लिखें और स्क्रिप्ट के अंदर आप लिख सकते हैं कि वेरिएबल पर्सन, फॉर एग्जांपल वेरिएबल पर्सन इक्वल टू, यहाँ पर ऑब्जेक्ट का तरीकाकार बदल। ठीक है, वेरिएबल पर्सन इक्वल टू के पर्सन में से ये डिटेल स्टोर होंगे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नेम, यहाँ पे करण, तो फर्स्ट नेम डबल कोट्स में आप बंद करेंगे स्ट्रिंग को। फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल मुसव्विर, ओके। फिर यहाँ पे कामा, फिर सेकंड, जैसे आप लिखते हैं आपकी मर्जी। यू कैन राइट दीज नेम्स वट एवर यू वांट, Musawwir Khan, and put comma here and eye color, for example blue, and weight 70 kg, but also you have to write that 70 kg inside quote, and जो इंफॉर्मेशन, जितने इंफॉर्मेशन आप चाहते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं, वट एवर anything. Here you can write anything, like for example show object, okay. You can write any type of name and you can give any type of name to that id, okay. ये यूनिक नेम होना चाहिए जो भी आप नाम दे रहे हैं। Here if you want to access the musawwir, then musawwir is stored inside the first name, and first name is inside an object of a person, because the first name is an attribute or a property of a person, okay. And this is also a variable, and variable is used to store some value, okay. बिकॉज वेरिएबल में हम कुछ चीज़ स्टोर करते हैं, तो कुछ वेरिएबल्स में से ये होता है कि एक वैल्यू स्टोर होती है, कुछ वेरिएबल्स में से मल्टीपल वैल्यू स्टोर होती हैं, और वो वेरिएबल के स्पेशल टाइप होते हैं, लाइक एन एरे, एरे स्टोर्स मल्टीपल नेम्स और मल्टीपल वैल्यूज, ओके, सच लाइक दैट पर्सन्स में भी होता है। तो आप यूं करते हैं, इफ यू वांट टू एक्सेस देन वी कैन शो द आउटपुट थ्रू four methods and document that, right? Alert, for example I want to show in alert, then in alert I have to show that first name, just I am going to show you first name, simplest way. But here you have to write person dot first name, okay, because inside a person you are going to access the first name, yeah, whatever. Control C, control V, and control C, control V, control S, Musawwir, okay, because I want to access only Musawwir. Now if you want to add some message to Musawwir, then you have to write the message in double quotes and you have to concatenate that message, and here whatever you want to write, like the name of the person is Musawwir, control S, the name of the person is Musawwir. Here is a message and this is a value, this is an attribute name. And if you want to add something more, then you have to concatenate that, chain बनाना है, you have to make a chain, फिर इस मुसव्विर को concatenate करना है खान के साथ, then you have to write here for example concatenate message and the R, concatenate person dot second name, then here Musawwir Khan, but here you have to bring spaces between them, and to bring spaces between them you have to concatenate a space, okay, and you have to concatenate again the space with the Khan. Now see, यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है,
Musawwir Khan. This is for spacing. Okay, let's see. Yes, sure. the message or name or either keep the file see the object display كان display में पता लगी कि the message दे वाला दाव पता डिपेंड कीजिए मैसेज तसलम शो के बता तो पता दे कहना चाहिए दाव को दा मैसेज दे और दा डायनामिक वैल्यू दा या बोल्ड का ओके नो यूजर दे पत्ते ले गोल जरूरत नहीं था that is want if you want to show that output inside a document that get element by id then what you have to do you have to write all these things here like if you want to display that output inside h1 then you have to write document dot get element by id and the id is what show object please elaborate show object dot थोड़ा सा ऊंचा बोले कोई बात नहीं अगर आप गलत होते हैं डोंट मैटर डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू वेरी गुड ओके या पूरा का पूरा ये सब कुछ ले आए okay control C and here control V and here you put the comma means inner HTML में से शो करे the name of the person is this is a message इसके बाद person का first name फिर space फिर person का second name and inside H1 and now you have to change the color of h1 you have to change the font family of h1 and you have to place the h1 on a center and you have to do anything you want with h1 once you got the result then here in styling you can write the color for h1 like the color for h1 is green okay and text align center and apply all these attributes which attributes you want okay this is a Musawwir Khan okay and if you want to access some other attributes of the person then you can also write here concatenation sign and you can also write the message like his eye color is per concatenate and then person dot eye color very good control C and now see the name of the person is Musawwir Khan his eye color is blue but blue जो है वो वहां से आ रहा है and these are called accessing an object एक object के properties को access करना एक object को access करना ये भी functions में से शामिल है accessing object methods किसे कहते हैं सरहद वालों से पूछता हूँ methods किसे कहते हैं बाजी पता नहीं है मेथड्स का लेकिन आप देखते नहीं हैं ओके फ्रॉम टुमारो आप देखेंगे कल से आज से नहीं ओके क्या है मेथड्स और फंक्शंस ये सेम नाम है फिर से बता रहा हूँ मेथड्स और फंक्शन सेम नाम है तो मतलब एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मेथड्स ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को एक्सेस करना ऑब्जेक्ट के मेथड्स को एक्सेस करना तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है पर्सन और इनसाइड पर्सन यू हैव टू मेक एन ऑब्जेक्ट यू हैव टू मेक एन ए मेथड और ए फंक्शन तो मतलब यहाँ पे एक फंक्शन बनाना जिस तरह के फर्स्ट नेम वर्दा लास्ट नेम खान एंड फुल नेम को एक फंक्शन असाइन करते हैं फुल नेम को एक फंक्शन या एक मेथड असाइन करते हैं जैसे कि फुल नेम फंक्शन और फंक्शन रिटर्न दिस डॉट फर्स्ट नेम दिस मीन्स ये करंट फर्स्ट नेम जो है करंट जो आप कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो काम आप कर रहे हैं तो मीन्स दिस आप इसके लिए दिस यूज कर सकते हैं या आप यहाँ पे स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम भी लिख सकते हैं
लेकिन दिस करंट के लिए यूज होता है। रिटर्न करें दिस डॉट फर्स्ट नेम प्लस फिर स्पेस एंड दिस डॉट लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम में क्या है वर्दा, लास्ट नेम में क्या है खान, और ये दोनों कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे फुल नेम में। तो मतलब फुल नेम में आ जाएगा वर्दा स्पेस खान, ठीक। और फिर आप एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट डॉट फुल नेम, स्टूडेंट डॉट फुल नेम, और फुल नेम में क्या स्टोर है वर्दा खान। तो मतलब ये है कि वर्दा खान को एक फंक्शन असाइन हुआ है, फंक्शन असाइन हुआ है ना, और उस फंक्शन के अंदर ये वर्दा खान है रिटर्न हुआ है इसके अंदर। दैट्स मीन्स एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट मेथड्स, ऑब्जेक्ट के मेथड्स को एक्सेस करना। क्लियर? ओके। संगा फंक्शन सर। student